હવે વાત કરીશું નર્મદા નગરપાલિકા વિશે। અહીંયા પણ ફોર્મ ચકાસણી આજે પૂર્ણ થઈ છે અને ફોર્મ ચકાસણી થયા બાદ જે આંકડો સામે આવ્યો એ પણ ખૂબ જ મહત્વનો છે। નર્મદા નગરપાલિકા ચૂંટણી માટે 126 ફોર્મમાંથી 84 ફોર્મ જ માન્ય રહ્યા। ભાજપની વાત કરીએ તો સૌથી વધારે 64 ફોર્મ ભરાયા, 28 ફોર્મ માન્ય રાખવામાં આવ્યા। કોંગ્રેસમાંથી 9 ફોર્મ ભરાયા, 8 ફોર્મ માન્ય રખાયા। આમ આદમી પાર્ટીમાંથી 22 ફોર્મ ભરાયા તો આમ આદમી પાર્ટીના 21 ફોર્મ માન્ય રાખવામાં આવ્યા। 15 તારીખે ફોર્મ ખેંચવાની છેલ્લી તારીખ છે। आज ये स्क्रूटनी का प्रोसेस खत्म हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट वर्किंग डे जो कि वेडनेसडे आ रहा है, 3 बजे तक विड्रॉवल का प्रोसेस होगा, जिसमें जिसको अपनी उम्मीदवारी पाछी खींचनी है तो वो विड्रॉ कर सकता है। उसके लिए उम्मीदवार को खुद हमारी कचेरी में आना पड़ेगा, या फिर अगर किसी रीजन से उम्मीदवार जेल में है या पुलिस कस्टडी में है तो वो किसी को अधिकृत करेगा तो ही हम विड्रॉल को अलाउ करेंगे, और विड्रॉल के बाद हम लोग सिंबल अलॉटमेंट 15 तारीख को कर देंगे। अभी तक हम ये माहिती अभी कंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि स्क्रूटनी की स्टेज के बाद विड्रॉल एक इम्पॉर्टेंट स्टेज होती है। जब तक विड्रॉल नहीं होता हम डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो जैसे 15 तारीख को विड्रॉ होगा, उसके बाद पता चलेगा कि कोई बिनहरीफ हुआ है या क्या हुआ है।